हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारे इस सुपर मैथमेटिक्स वीडियो में आपका स्वागत है और आनंद उठाइए हमारे इस सुपर मैथमेटिक्स वीडियो। Friends, in this video we will discuss about the mathematics of class 10th, in which chapter 8 introduction to trigonometry. So let us start. Before I want to tell you that किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। तो ये एक विचार है, इस विचार को ध्यान रखिए और अपने धैर्य को बनाए रखिए और आपकी जो तपस्या है वो तपस्या पढ़ने और लिखने की है, उसे जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हमारे इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और सीखिए हर चीज को। क्लियर द ऑल द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। सो व्हेन यू हैव ए राइट एंगल triangle, there are 5 things you can know about it. किसी भी राइट एंगल में जो 5 चीजें होती हैं उन्हें हमें ध्यान रखना होगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए सीखते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड, दैट इज ए बी एंड सी। Always keep in mind that if this is a triangle ABC and here is A, then opposite sides of this vertex is always known as A, and if it is B, this is B, then the opposite side of this vertex will be B, and if it is C, then the opposite sides of this vertex will be C. This is the length of sides. Now next one, the measurement of acute angle, that is A and B. We can say that this is alpha and beta also. This one is A means alpha and this one is B means beta. So these two angles. Third angle is always 90 degree. Keep in mind that the third angle means this angle always 90 degree. Why? Because this is a right angle triangle. So this will not means never changed. After that, if you know two of the sides, you can use the Pythagorean theorem to find the other sides. Means if let us consider in this right angle triangle, if you know that here A equal to 3 and B equal to 4, then always you can find the third side using Pythagorean theorem, that is Pythagoras theorem. How can you find the value of C? You know that A equal to root over C square minus B square, because this is A means altitude, so you can write the altitude equal to hypotenuse square of hypotenuse minus square of base. So this is the A. If requirement is B, अगर हमें B पता करना है मीन्स बेस पता करना है, तो आप हाइपोटेनस थ्योरम इस तरह से यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से यूज करेंगे। B इक्वल टू रूट ओवर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मीन्स इफ वी फाइंड हेयर एल्टीट्यूड एंड बेस, देन ऑलवेज कीप इन माइंड दैट C square means hypotenuse you will write first of all, after that remaining sides. Now if requirement is hypotenuse,
then you can write here C equal to root over A square plus B square, means altitude square plus base square. So this is the Pythagoras theorem. But if here A equal to 3 then and B equal to 4, then how can you find C in this case? Because requirement is hypotenuse, so we will write here hypotenuse is equal to root over altitude square plus base square, means A square plus B square, and substitute the value of A and B. A is here 3 and B is 4. So you substitute these values, you will get 3 square plus 4 square. 3 square means 9 and 4 square means 16, and 9 plus 16 you will get 25, and root of 25, this you will get 5. So this is the hypotenuse. So keep in mind that if two sides is given in any right angle triangle, then you can always find the third side using Pythagorean theorem. Moving for next, and if you know either angle A or B, you can subtract it from 90 degree to get the other one. ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक ही एंगल दिया है तो दूसरा एंगल आप 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करके भी पता कर सकते हो. Why? Because A plus B always 90 degree, means alpha plus beta equal to 90 degree. Why? Because this is always 90, then 90 plus 90 you will get 180 by the angle sum property. So don't go to large method, directly you subtract the given angle by 90 degree, then you will get the other angle. But if angle B is given, then also you subtract from 90 degree this B, you will get this A, that is angle A. Now moving for next, this work because there are 180 degree in a triangle and we are already using up 90 degree. 90 डिग्री पहले से ही आपको मिला हुआ है, तो बाकी का जो बचा वो 90 ही बचा है, इसीलिए हम 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट अस हियर A इक्वल टू 30 डिग्री. अगर A इक्वल टू 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली B इक्वल टू हाउ मच 90 minus 30 means you will get 60 degree. Therefore the value of B is always 60 degree in the case of A equal to 30 degree. Now dear, but what if you want to know the angle? अब एंगल के विषय में भी थोड़ा जानकारी रखें. Well, here is the central inside of trigonometry. If you multiply all sides of a right triangle by the same number k, you get a triangle that's of different size having same angles. इस चीज को भी हमें याद रखना है कि अगर मान लो हमें यहाँ पर A और B और C साइड दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू हमें दे रखी है, और इन वैल्यू में अगर हम एक कांस्टेंट नंबर से सभी में मल्टीप्लाई करें तो एंगल कभी भी चेंज नहीं होंगे. ठीक है, इस चीज को भी याद रखना. दे विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल, तो एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा. यहाँ पे अगर 30 डिग्री था तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी 30 डिग्री ही रहेगा. मीन्स समझ गए क्या मैं बता रहा हूँ. मान लो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, B इक्वल टू 4, और यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 12. साइड 4 की जगह 12 हो जाएगी. और यहाँ भी अगर मान लीजिए कुछ 2 दिया है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगी. और यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे आपकी 15 हो जाएगी. 5 3 से एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है. इन दैट केस ट्राइंगल विल बी गोज टू लार्जर बट एंगल विल नॉट चेंज. ट्राइंगल का शेप बड़ा हो जाएगा लेकिन उसके एंगल नहीं बदलेंगे. Moving for next, this is the concept of trigonometry. So moving for next one, how does that help us? Take a triangle where angle B is 60 degree and angle A is 30 degree. Okay,
let us, this is a right angle triangle and this is angle is 30 degree and second one is 60 degree. Okay, now if side A is 1 unit long and side C is 2 units long, so we can say that for a triangle of this shape the ratio of side A to C is 1:2. Always this is 1:2. There are ratio for every shape of triangle. किसी भी ट्रायंगल के लिए शेप आपका कुछ होगा तो रेशियो भी उसका उसी शेप में होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. बट देयर आर 3 पेयर्स ऑफ साइड्स पॉसिबल. नंबर 1, yes, so there are 3 sets of ratio for any triangle you will get. They are mysteriously named sine, शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन. याद रखेंगे हम अभी ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे जिसकी बात हम कर रहे हैं. सो इट इज द नेम साइन एंड दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन. नाउ कॉस, दिस इज ए नेक्स्ट रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉस इज कोसाइन. आफ्टर दैट tan, एंड दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेंजेंट. ये शॉर्ट फॉर्म है टेंजेंट का जिसे हम tan कहेंगे. कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होगा cos एंड साइन का शॉर्ट फॉर्म होगा sin, ओनली sin. ठीक है. सो एंड द रेशियो आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड, यू जस्ट नीड टू यूज देम. ठीक है. किसी भी ट्राइंगल के साइड का रेशियो हम इनका यूज करके पता कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. शो व्हाट आर द फॉर्मूला. अब इसका फॉर्मूला क्या है रेशियो पता करने का. तो इसके लिए हम एक आसान सी ट्रिक लेके आए हैं जिसका नाम होगा यस साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. साइन इज अपोजिट ओवर हाइपोटेनस, ये याद रखना है. साइन इज अपोजिट ओवर हाइपोटेनस. अपोजिट ओवर हाइपोटेनस मीन्स दिस इज ए साइन. तो इसके लिए हम ये याद रखेंगे सो SOH. S स्टैंड फॉर साइन, O स्टैंड फॉर अपोजिट एंड H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस. मीन्स साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेनस या डिवाइड अपोजिट ओवर हाइपोटेनस या अपोजिट ओवर हाइपोटेनस. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज cos theta and theta can be changed, that is cos A, cos B, cos C. Similarly here sin A, sin B, sin C, otherwise sin alpha, sin beta, sin gamma. Similarly here cos alpha, cos beta, cos gamma. So cos, for cos, that is the next ratio of trigonometrical, that is cos theta equal to adjacent side upon hypotenuse, means adjacent over hypotenuse. So this is for कहे. So कहे CAH. C stand for cos, A for adjacent and H for hypotenuse. Means cos is adjacent over hypotenuse, means you can say here cos theta equal to adjacent over hypotenuse. And for next, that is tan. So TOA, this is TOA, that is T stand for tan, O stand for opposite and A stand for adjacent. Means tan theta equal to opposite over adjacent. So tan is opposite over adjacent. You can use this word if you need to memorize the formula. इस आप तो फॉर्मूला ये याद ही हो गया होगा. सो कहे तो वा, सो कहे तो वा. सो कहे तो वा का मतलब इसमें तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ जाएंगे और उनके साइड्स भी आ जाएंगे. एक बार फिर समझ लीजिए. सो का मतलब है साइन इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेनस
एंड इस कहे का मतलब समझ लीजिए, कॉस इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड टोआ, टोआ का मतलब टेन इक्वल टू अपोजिट ओवर एडजेसेंट. ओके, so I think that the concept for trigonometrical ratios has been cleared. Now moving for next, some terminology here. Before we can use the ratio, we need to get a few terms straight. हमें कुछ चीजें और भी याद रखनी है इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए. क्या याद रखना है? The hypotenuse, दिस इज h by p. इन शॉर्ट फॉर्म हाइपोटेन्यूज को हम h by p कहेंगे. इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, इट नेवर चेंजेस. ये जो हाइपोटेनस है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कभी चेंज नहीं होगा, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा वो उस ट्राइंगल का हाइपोटेनस होगा. नाउ द अपोजिट मीन्स ओ डबल पी, दैट इज अपोजिट. शॉर्ट फॉर्म में हम ओ डबल पी लिखेंगे. इज द साइड डायरेक्टली अक्रॉस फ्रॉम द एंगल यू आर कंसीडरिंग. मीन्स अगर हमने कोई भी ट्रायंगल लिया है तो उसके सामने का ठीक साइड अपोजिट साइड होगा. ठीक है. आफ्टर दैट द एडजेसेंट, दैट इज ADJ. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडजेसेंट, इज द साइड राइट बिसाइड द एंगल यू आर कंसीडरिंग. मतलब जो भी एंगल लिया है उसी से ज्वाइंट साइड होगा, वो आपका एडजेसेंट साइड होगा. ठीक है. तो एक बार इसे फिगर में समझ लेते हैं. हियर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. नाउ this is the hypotenuse for this triangle and this is opposite and this is adjacent angle for y if you take this angle theta. ठीक है. Sorry, if you take this angle theta. Now first of all you try to understand the first figure. Let us, this is the angle A. So looking at the triangle in term of angle B, yes, this is the angle B, you can see here. Now A is the adjacent side. ये आपका जो साइड होगा वो एडजेसेंट होगा. याद रखिएगा जिस साइड से एंगल बन रहा है वो आपका एडजेसेंट होगा. और मैंने अभी आपको बताया हाइपोटेनस विल नेवर चेंज्ड. हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा. ये तो हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा, केवल बदलेगा बेस और एडजेसेंट, मींस अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड ही बदलेगा. तो यहाँ पर ये एडजेसेंट साइड है, ये एंगल बन रहा है इसलिए ये एडजेसेंट हो जाएगा. और इसके ठीक अपोजिट इन फ्रंट में जो साइड होगा वो इसका अपोजिट साइड होगा. सो ए इज द एडजेसेंट, दैट इज नियर द एंगल. जो नियरेस्ट होगा, एंगल के जो नियरेस्ट का साइड होगा वो आपका एडजेसेंट होगा. इस चीज को याद रखना पड़ेगा. सो दिस इज A means adjacent, just near to the angle B. Okay. Now moving for next, B is the opposite across from the angle. B के ठीक सामने का जो साइड होगा वो अपोजिट साइड होगा. इस चीज को याद रखना, एंगल के सामने का साइड अपोजिट साइड होता है. ठीक है. So you can say here this B is always opposite, that is across the angle. ये आपका अपोजिट साइड होगा. एंड नेक्स्ट वन, C इज ऑलवेज द हाइपोटेनस. C विल नेवर चेंज्ड. C कभी भी चेंज नहीं होगा, दैट इज हाइपोटेनस विल नेवर चेंज्ड. सो दिस इज द अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर ट्राइंगल, दैट इज द अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस. नाउ यू कैन यूज हियर ए शॉर्टकट फॉर्मूला, दैट इज SOHCAHTOA for sin cos tan. Okay, this is hypotenuse, means this is the longest side of the triangle. Now moving for next. But if we switch angle, अगर हम एंगल को चेंज कर देते हैं, ये इस एंगल की बजाय हमने ये एंगल ले लिया. Let us here looking at the triangle in term of angle A. अगर ये हमने एंगल A लिया, yes, then the opposite and adjacent side will be changed here.
corresponding changing here something. So what change here? You can see here. A is the opposite means across from the angle. A के सामने वाला, मैंने आपको पहले भी बताया था, A के सामने का जो साइड होता है वो अपोजिट होता है और A के जो नियरेस्ट साइड होता है वो एडजेसेंट होता है. सो सी हियर दिस इज द अपोजिट साइड for this triangle if angle is given here A. Now for B, B is the adjacent, that is near the angle. B आपका हो जाएगा, ये B जो साइड है वो आपका हो जाएगा adjacent side. So this is adjacent, you can say. Yes, of course this is B and this is the adjacent, just near to the angle A. Now hypotenuse will never change here. हाइपोटेनस जहां था वो वहीं पे स्टेबल रहेगा. हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, आप कोई सा भी एंगल लीजिए. तो फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो इस चीज को भी याद रखेंगे, विच वन इज अपोजिट एंड विच वन इज एडजेसेंट फॉर द गिवन एंगल्स. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एन एग्जाम्पल. लेट अस ट्राई. So here is given that this angle is alpha and this one is beta, and B is given that root 3 and A is given here 1. So what is the value of, suppose we want to find angle A, that is alpha हमें पता करना है, ठीक है. So how can we find, what is side A? Side, अगर हमें ये alpha पता करना है तो side A क्या होगा? Yes, of course you are correct, this is opposite. And B क्या होगा? B, yes, again your answer is correct. B is the adjacent side. Yes, of course this is adjacent side. Now moving for next, with opposite and adjacent we use the formula, that is tan formula. Here we can find the value tan theta equal to opposite tan. Tan means TOA. TOA, that is tan theta equal to opposite over adjacent. Okay, so any formula you can use here. If here is requirement sin theta, then you can, sin means so, SOH, S means sin, O means opposite over hypotenuse. So you can find here using this formula, you can say here tan theta equal to opposite over adjacent, that is tan alpha equal to 1 upon root 3. 1 is y, opposite is 1 and adjacent is root 3. So 1 upon root 3 and 1 upon root 3 is written as, how can you say, that is 1 upon root 3 is the value of tan 30 degree. So tan and tan is cancelled here. So you will get alpha equal to 30 degree. On comparing from both sides, you will get alpha equal to 30 degree. But keep in mind that without angle, these all the trigonometric ratios are meaningless. अगर हम इसे कहें tan equal to, then we cannot say here anything. We will say always tan theta equal to opposite upon adjacent. अगर ये थीटा हम हटा दें तो इस tan का कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा. दिस इज टोटली मीनिंगलेस, इसका कोई भी मतलब नहीं होगा. व्हेन वी पुट हियर थीटा, देन दिस इज द मीनिंगफुल, मीन्स दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. नाउ फॉर tan alpha, alpha means this angle, so this is the opposite. एंगल के सामने का साइड अपोजिट होगा और एंगल के नियरेस्ट का साइड एडजेसेंट होगा. तो दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 अपॉन रूट 3 आपको मालूम है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है. तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू आपको मिलेगा 30 डिग्री. वेयर डिड द नंबर फ्रॉम द रेशियो कम फ्रॉम? ओके, ईच शेप ऑफ ट्रायंगल हैज 3 रेशियोज. सभी ट्रायंगल में 3 रेशियो होंगे, याद रखिएगा. दीज रेशियोज आर स्टोर्ड योर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स. In the last question, tan theta equal to tan 30 degree. So you can say by the table of the value, that is tan 30 degree equal to 1 by root 3. Now next for another tangent example here.
वी वांट टू फाइंड फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए दैट इज बीटा के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू पता करना है। तो जब ये बी हो जाएगा तो अपोजिट आपका ये साइड हो जाएगा और एडजेसेंट ए बन जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बी एंड एडजेसेंट हो जाएगा ए। सो वी विल राइट हियर बी इज द अपोजिट, that is A is the adjacent, and so we can use here tan beta. So once again tan means toa, that is tan beta equal to opposite over adjacent. So we will get here opposite ये हो गया √3 upon adjacent means 1 and √3 upon 1 means √3. So the √3 is the value of tan, that is tan 60 degree. On comparing we will get beta equal to 60 degree. Okay, so tan theta equal to opposite over adjacent. So we will put the values, you will get beta equal to tan 60 degree. Now calculating a side if you know the angle. अगर angle दिया हुआ है तो आप साइड को भी पता कर सकते हैं। Here angle is given 45 degree and one side is given, that is this is 6. So if it is this angle is given 45, it means this is the adjacent, means B is the adjacent and A is the opposite. So which formula you will use here? That is, we know a side and the angle is 45, not here 25, this is 45. So we want to know the opposite sides. So here tan theta equal to opposite over adjacent, this is the formula. Now you will use here tan 45 degree equal to A upon 6. 6 is, this is the adjacent side, and A equal to means you will transpose this 6 to left hand side. So this goes to into the multiplication, you will get 45. Another tangent example, we want to find angle beta. B is the opposite. So from the figure you can see that the in front side, this is the opposite and this is the adjacent side. So A is the adjacent, then we can say, so we used tan beta equal to √3 by 1, because tan means toa, to means T means tan, O means opposite and A means adjacent. So this is the opposite and this is the adjacent, that is √3 by 1 will gives tan beta equal to √3 by 1 means √3 and √3 is the value of tan 60 degree. So beta equal to 60 degree. Now this is the formula, tan theta equal to opposite upon adjacent. Now calculating a side if you know the angle. अगर एंगल दिया हुआ है तो हम साइड भी पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। We know side adjacent and an angle 45 degree. We want to know the opposite side. So formula is tan theta equal to opposite upon adjacent. In this figure you can see here the angle, this is L 45 degree and this one is beta. So if it is 45 degree, then B is the adjacent side and A is the opposite side. So we will put this value in this formula, that is tan 45 degree equal to opposite means A and adjacent means B, that is 6. So on transposing this will be get, transpose this 6 to left side, we will get A equal to 45 degree into 6. And tan 45 degree from the table we will get 1. So 1 into 6 means 6. So this is the value of A, that is the opposite sides in this diagram. Now another tangent example, if you know a side and an angle, अगर एक side और एक angle दिया है, you can find the other side. How can you find? Because you know that tan theta equal to opposite over adjacent, and here this angle is given 30 degree, therefore this is the adjacent side and this one is the opposite sides. So you can use here tan 30 degree equal to opposite means 6 upon adjacent side means B. So tan 30 you cross
transpose this b to right side, that is tan theta tan 30 degree by 1, by cross multiplication you will get b equal to 6 divided by 30 degree, means you transpose this b to the left side and tan 30 to the right side. So tan 30 just come into the denominator and b is here, that is the requirement. So you know that the value of tan 30 degree equal to 1 upon root 3. So 6 upon 1 upon root 3, and the value of 1 upon root 3, everybody know that this is 1.732. So you will put this multiplying this, that is b equal to 10.4. Now moving for next application of trigonometry. You look up at an angle of 60 degree at the top of a tree that is 10 meter away. The distance to the tree is the adjacent side. The height of the tree is the opposite side. Therefore, we can calculate it tan 60 degree, that is tan theta, because this is the angle. So it means this is the opposite side and this is the adjacent side. So you can use that at TOA, that is T for tan, opposite upon adjacent. So this is tan theta is 60 degree, opposite side is required, and this is adjacent side means 10. Now by cross multiplication we will get opposite sides equal to 10 into tan 60 degree. And the value of tan 60 degree, everybody know that this is root 3, and the value of root 3 is 1.732. So we will get, that is 17.32. This is the height of the tree. Now why do we need the sin and cos? अब sin cos का यूज कब होता है, चलिए इसका भी एप्लीकेशन समझ लेते हैं. We use sin and cos when we need to work with the hypotenuse. जब हमें hypotenuse दिया रहेगा, and that case we will use either sin or cos. So requirement here, let us hit question. If you noticed that tan formula does not have the hypotenuse in it, therefore, so we need different formula to this work. Sin and cos are the ones. Let us here for sin we want to find the angle alpha. Alpha हमें पता करना है, ठीक है. And this side is given b and this is a equal to 5 and c is given here 10. So our requirement to find the alpha. How to work it? Sin, since we have opposite and hypotenuse, we use sin, because sin means so, S-O-H. So S stand for sin and O stand for opposite and H stand for hypotenuse. So sin theta equal to opposite over hypotenuse. So we will put here sin alpha, theta is alpha and opposite side is 5 and hypotenuse is 10. So 5 upon 10 means 0.5, that is 1 by 2. And the 1 by 2 is the value of sin 30 degree. So we will get A equal to 30, that is alpha equal to 30 degree. Now moving for and one more sine example, let us find the length of side A. अब हमें साइड पता करना, एंगल दिया हुआ है. If angle is given, then find this side. So if this angle is given, then 100% this is the opposite and this is the adjacent and hypotenuse is also given. So if the hypotenuse is given, so first of all we concentrate your mind that we will use either sine or cos. But here is hypotenuse and opposite side, so only we will use here sine. So here sine theta equal to opposite over hypotenuse means theta is given 45, so sine 45 equal to A upon 20 because hypotenuse is 20. Now by cross multiplication we will get, transpose this 20 to left side, you will get A equal to sine 45 into 20 and sine 45 you know that 1 upon root 2 and the value of root 2 is always 1.414. So
on simplifying and multiplying this, we will get 0.702 into 20. Then we will get A equal to 14.14. So this is the side of this triangle, that is the opposite sides. Now and finally cos. When you used cos? We use cos when we need to work with the hypotenuse and adjacent. If the adjacent and hypotenuse is given, then always we will use here cos, trigonometrical ratio cos. So let us here beta is given, and then this is the adjacent side and this is the hypotenuse, and our requirement to find the angle beta. So we will use here 100% cos, you know formula. So kahe means CAH. So C stand for cos and A stand for adjacent and H stand for hypotenuse, means cos theta equal to adjacent upon hypotenuse. So adjacent is, so here cos beta equal to cos 60 degree, because 1/2 is the value of cos 60 degree, and here cos and cos is cancelled from the both side. Then we will get by comparison beta equal to 60 degree. Now moving, here is an example. Spike want to write down a steel beam. The beam is 5 meters long and is leaning against a tree at an angle of 60 degree to find to the ground. Ground से ये 60 डिग्री पर झुकी हुई है, तो his friend want to find out how high up in the air he is when he starts, so they can add it to the doctor's report at the hospital. So how high up is he? Let us try. How do we know which formula to use here? Let us, this is a tree and this is a steel and this angle is 60 degree, okay, and this is lean 60 degree from the wall, okay. Now the height of this is 5 meter. So our requirement, what are we working with? We have an angle 60 degree, okay. We have hypotenuse. We need opposite पता करना है. Hypotenuse दिया हुआ है, angle ये दिया हुआ है. So this is the opposite, and see, and this is hypotenuse. Hypotenuse in opposite is given, so we will use here which? Sin theta. So calculate it. Sin 60 degree equal to opposite over hypotenuse, and sin 60 degree opposite hypotenuse is given here 5. So by cross multiplication, transpose this 5 to left side, we will get opposite equal to sin 60 degree into 5, and the value of sin 60 degree, everybody know that this is √3/2, and the value of √3 is 1.732, and divide by 2 into 5. So half of 1.732 and into multiplying by 5, we will get opposite side is 4.33 meter. That is, spike will have fallen 4.33 meter, okay. Now one last example. Monica dropped her Walkman off the Leaning Tower of Pisa when she visited Italy. It falls to the ground 2 meters from the base of the tower, okay. If the tower is at an angle of 60 degree to the ground, how far did it fall? Okay, so let us, this is actual situation. 2 meters is the distance from the ground, and B, this is requirement. What part do we have? We have an angle 60 degree. We have an adjacent side, that is, this angle is 60, therefore this is adjacent, this is adjacent side, and this one is opposite. So adjacent side is given 2 meters.
we need opposite sides. So adjacent and opposite, which trigonometrical ratio we will use here? That is 100%. Since we are working with the adjacent and opposite, we will use the tan formula. That is tan 60 degree equal to opposite upon adjacent. The tan 60 degree opposite upon adjacent is given here 2, and by cross multiplication, otherwise transpose this 2 to left side, we will get opposite equal to tan 60 degree into 2, and the value of tan 60 degree equal to 1.732 into 2. So we will get 3.464. That is Monica's workfall 3.46. Okay, 46 meter. You can take only 2 digit after decimal. So Monica's workmanfall fell 3.46 meter. Now what are the steps for doing one of these questions? Make a diagram if needed. सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्या करना है? Determine which angle you are working with. थर्ड नंबर पे क्या करना? Label the side you are working with and decide which formula fit the sides. Substitute the value into the formula and solve the question for the unknown value. ये steps हैं एप्लीकेशंस के लिए, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए. सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर पता करेंगे क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद लेबलिंग करेंगे कौन सा साइड दिया एडजेसेंट अपोजिट, इसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में फॉर अननोन. वी विल फाइंड डज द आंसर मेक सेंस. ओके, सो टू ट्रायंगल प्रॉब्लम. Although there are two triangles, you only need to solve one at a time. The big thing is to analyze the system to understand what you are being given. Okay, consider the following problem. You are standing on the roof of one building looking at another building and need to find the height of both building. ये क्वेश्चन है कि आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं और आपको बिल्डिंग की ड्रॉ ए डायग्राम. You can measure the angle 45 degree down to the base of other building and up 60 degree to the top as well. You know the distance between two buildings is 45 degree. So you can draw this diagram. ये first building, this is the second building. Now you are observing the top of the building, then angle of elevation is given here 60 degree, and this one is the angle of depression. You are looking just base of this building, so the angle of depression is 45 degree, and this is the distance from both buildings, that is 45 meter. So break the problem in two triangles. The first triangle, that is this one. Okay, you can see here are two triangle, triangle number first and this is the triangle number second. So we will take first triangle and second triangle one by one. So you will get in the first triangle, here is given, what given? Angle, and this is the adjacent side and this is the opposite side. So think which formula you will use. You will use here, and second triangle is here. This is 45 degree and this is distance 45 meters, sharing both base is same, and this is the height of the second building. So note that this here side 45 meter long, A and B are height of the building. Now the first triangle, we are dealing with an angle, the opposite and the adjacent. This gives us 10. So tan 60 degree equal to A upon 45 degree. Now you transpose this 45 degree to left side. A equal to 60 degree into 45 degree. But the value of tan 60 degree is tan 60 is root 3. At the value of root 3 is 1.73. Okay. So 1.73 into 45. You will get what you get. That is 1.73 into 45. You will get A equal to 77.94. So this is the
height of the building. Now for the second triangle, what to do? In this case, you will get, that is in this triangle, adjacent side is given and opposite side is also given. So this gives, you will use here 10. The tan 45 degree equal to, that is opposite side upon adjacent, that is b upon 45. Now transpose this 45 to the left side. You will get b equal to tan 45 degree into 45. So what you get? You will get b equal to 1 into 45 degree. Okay, so b equal to 45 meter. Now therefore from the both triangle you will get this thing. What does it mean? You will get, look at the diagram now. The short building is 45 meter tall. This is 45 meter. And the tall building is 77.94 meter plus 45 meter tall, which equal to 122.94 meter tall. So this is the answer of the tall building height is 122.94 meter. This is the answer for the question. तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।